Today is the lesson number 43 about MS Word shortcut key, and in this lesson you will learn how to select the formation of the text instead of text. इसमें आप सीखेंगे कि टेक्स्ट की बजाय आप फॉर्मेशन को आप कैसे सेलेक्ट करेंगे. फर्स्ट यू हैव टू सिंपली select the text, shift plus right arrow key, and then control shift plus C key to select the formation of the text instead of text. कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी की प्रेस कर देंगे तो उस फॉर्मेशन क्या सेलेक्ट हो जाएगी. नेक्स्ट मूव टू दैट सेंटेंस यू वांट टू सेलेक्ट. शिफ्ट प्लस right arrow key to select that sentence or text, and after that control shift plus V key pressed, and your text will be the formation will be selected. As your heading of the text is having this formation, the same formation will be of that sentence or paragraph that you want to have the same formatting of that sentence or place. So किस के फॉर्मेशन आपने सेलेक्ट करनी है. इनकी को जब प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी की तो उससे आपकी जो है ना इबारत की बजाय उसकी जो फॉर्मेशन है उसकी वजह करता है वो सेलेक्ट हो जाएगी. तो पहले उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी की सेलेक्ट कर देंगे. उसके बाद फिर आपने क्या वो सेंटेंस सेलेक्ट कर दें जिसको आप सेम फॉर्मेशन चाहते हैं. फिर उसको सेलेक्ट करने के बाद हाईलाइट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी की प्रेस कर देंगे तो उसकी सेम फॉर्मेटिंग हो जाएगी. तो सिंपल वे है टू सेलेक्ट द फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.